Good morning, guys. Today is 8th of June. Today is Tuesday, and as expected, the market opened flat. तो अभी मार्केट के पास एक काफी ज्यादा रेंज बन एक काफी छोटा रेंज बन गया है, विच इज 15,775 टुवर्ड्स द अपसाइड एंड 15,740 और 15,725 टुवर्ड्स द डाउन साइड. तो मैंने क्या किया है, आई हैव एंटर्ड अ पार्ट 15,600 and 15,850 triangle and a part 15,650 and a 15,850 triangle. That is a 250 point and a 200 point पार्ट ट्रायंगल्स मैंने किया है, 2:3 रेशियो में लिया है. सो वी हैव टेकन 3,600 क्वांटिटीज. मैं थोड़ा फंड्स को अभी भी थोड़ा बहुत मार्जिन बचा के रखा हूं, एंड ऑल्सो I have an overnight calendar spread which is not doing pretty well, like it's giving somewhere around 2 or 3k loss. All right. And on the Bank Nifty account, I've taken a 35,400 straddle which has already given somewhere around 25 points of decay. So what will be the adjustment points? The adjustment points going to be, let's say Bank Nifty starts falling below 35,200 levels. I think 35,200 levels तक ये hold कर सकता है. That is what I'm hoping for. So अगर market ने 35,250 levels को अगर breach कर देता है, then I'm going to come out of this position and shift this to 35,300 straddle को shift करना पड़ेगा. Alright, but जब तक market 35,300 के ऊपर है, I don't think there is any need to adjust to this position. And on the Nifty account, we are currently up by close to 1 point. The thing is that the premiums are super low, and it takes a lot of silent market. It takes a long silent market for these premiums to crash. तो इसलिए stop loss orders रख के मैं काम कर रहा हूँ, which is the call side stop loss is somewhere around $40 and the put side 15,650 put के तरफ पे मैं 44 rupees का stop loss रख के मैं काम कर रहा हूँ. The moment 15,650 put hits the stop loss, then most probably I'll be shifting those puts to 15,600 and I'll be working with that hypothesis. We are up by close to 2 points now. So any further updates, I'll keep you guys posted. Bank Nifty looks pretty weak, but Reliance is also not doing pretty well in particular. HDFC has breached the day's low and it's kind of tanking on the back of good volumes. So अगर HDFC एक border पे खड़ा है, like if it has to find some demand, I think it's this place. अगर यहाँ पे भी अगर demand नहीं मिलती HDFC को, then yes, HDFC looks a bit weak for the day. Alright, so Bank Nifty is also looking a bit weak and we are below 15,280 levels, but our straddle is still holding on to the value. मतलब straddles में इतना ज्यादा loss नहीं दिख रहा है. Alright guys, the time is 9:37. Bank Nifty continuously नीचे आ रही है, and because of which I had to shift the Bank Nifty position from 35,400 to 35,300 straddle, and काफी strict stop loss के साथ हम काम कर रहे हैं. And because of Bank Nifty, even Nifty is getting dragged down. HDFC weak है ही है, and Nifty IT ऊपर जा रहा है, but Nifty IT का कुछ भरोसा नहीं है, because Nifty IT can turn the tables like this. मतलब continuously एक uptrend में रहता है, suddenly एक selling pressure आ जाती है. So I'm not pretty confident about Nifty IT maintaining the index, but as of now, even Nifty looks a bit weak. अगर CPR breach हो जाता है तो I'm expecting 15,700 levels also to get tested today. So because of which I've completely pulled out of my position. ठीक ठाक exit मिला. I've made around 4 points. I captured around 4 points of decay. So we'll be waiting for some time. And Bank Nifty में adjustment points कैसा है? Bank Nifty में, see look at this. ये जो level है ना, ये level. So this level should definitely act as a support. तो जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता है, जब तक 180 175 लेवल्स ब्रीच नहीं होता है, तब तक आई एम गोइंग टू होल्ड ऑन टू दिस पोजीशन. चाहे थोड़ा बहुत लॉस दे दे. देखो ऑलरेडी इट्स गिविंग समवेयर अराउंड 500-600 पॉइंट्स लॉस, बट दैट्स ओके. मैं ऑलरेडी 2.5 के बनाया था, बट स्टिल आई टुक एन एंट्री बिकॉज दैट्स द वाओ. ऑलराइट गाइस, okay, put options are spiking a bit. Wow, put options काफी ज्यादा स्पाइक अप हो रहा है. पूरा 2.5 के का प्रॉफिट निकल गया आंख के सामने. चलो, the volumes are getting picked up, तो काफी ज्यादा वॉल्यूम पिकअप हो रहा है. बट let's see guys, let's see. Immediately लॉस दे दिया, and call options are not at all decaying. So अगर see, I was just telling you guys that if CPR gets breached, even 700 level is gonna get tested. कहाँ पे मार्केट 15,705. तो काफी अच्छे टाइम पे मैंने एग्जिट लिया है, बट
यहाँ पे इस पोजीशन मैनेज करते करते मेरा बैंक निफ्टी अकाउंट एक्चुअली थोड़ा ये हो गया। बैंक निफ्टी में क्या था एक्चुअली, मुझे बैंक निफ्टी में भी मुझे ऑलमोस्ट मतलब आइडिया था कि और नीचे आ सकता है, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस पुट्स टू स्पाइक अप दिस बैडली। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, इन अ मैटर ऑफ मिनट इट स्पाइक्ड अप बाय 100 पॉइंट्स, बिकॉज ऑफ विच ऑलमोस्ट सेकंड पोजीशन से ही ऑलमोस्ट 4.5k का लॉस हुआ। ऑलमोस्ट फर्स्ट पोजीशन से मैं ऑलमोस्ट आई हैड बुक लाइक 2.5k प्रॉफिट्स मैंने बुक किया था, बट बिकॉज ऑफ दिस सेकंड पोजीशन आई हैड टू टेक -2k लॉस, लाइक आई हैड टू टेक अ 2k लॉस इन दिस अकाउंट फॉर द डे। बट ओवरऑल यहाँ पे ठीक ठाक चल रही है। 15k वी मेड अराउंड 15-14k फॉर द डे, एंड पोजिशनल ट्रेड भी थोड़ा बहुत लॉस दे रहा है। पोजिशनल ट्रेड इट्स गिविंग समवेयर अराउंड 8k लॉस में चल रहा है पोजिशनल ट्रेड। दैट इज बिकॉज दिस 36,000 कॉल जो है काफी ज्यादा डीके हो गया। ऑलमोस्ट 334 रुपीज में मेरा एंट्री प्राइस था एंड इट्स ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 198। तो हेजेस से दिस हेजेस वाज सपोज टू सेव मी, बट इन हेजेस से ही मेरे को 13-11k का लॉस चल रहा है, because of which I am currently down by 8k on the positional trade. But I don't think there is any need to worry about it, क्योंकि 35,000 काफी अच्छा सपोर्ट लगता है मुझे अभी भी फिलहाल। even now like I feel that 35,000 is a very good support. I've taken a 35-200 straddle with a stop loss of 400 and 400 on both the sides. Alright guys, the time is close to 1:15 and I have not taken any intraday positions because the risk reward was not considered favorable for me. So instead what I've done is I've taken a 35-500 straddle in the main account. Bank Nifty 35-500 straddle को मैंने main account पे लिया है because Bank Nifty got a good demand at the 35,000 levels. It looks like 35,000 levels should be defended at any cost. That's why I've taken a bullish position. So how I'm gonna manage this position is, let's say the day's low gets breached, I'm going to take whatever the loss or whatever the profit this gives and I'm going to close the position. But if at all the day's low is not breached, I'm going to buy the appropriate hedges to this. अच्छे से hedges buy करके I'm going to carry this overnight. Suppose let's say market ऊपर की तरफ चला गया, let's say market heads higher, ऐसे ऊपर निकल जाता है, then I'm going to buy some hedges to this and I'm going to carry it overnight. ठीक है, तो no other trades have been taken in the Bank Nifty account. Loss लिया मैंने, बंद किया अभी फिलहाल, so there is no need to dive into every single trade that you see. And yeah, after this fall Nifty has been pretty sideways and looks like some of the straddles would have given like good decay, and even the 15,850 and 15,550 strangle has also given somewhere around 2.5-3 points of decay. So as of now we are up by around 18k intraday basis, and this 35,500 straddle is kind of giving a loss now. Let's see, अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो 35,500 का straddle it looks something like this. अभी मैं फिलहाल hedges buy नहीं किया है, that is because so खाम का अभी से ही मतलब hedges में क्यों डीके दूं? I'll buy the hedges when the market's about to close. तो 2 घंटे में मतलब जो डीके होना चाहिए वो डीके होने दो, उसके बाद I'll buy the hedges, right? So that's the hypothesis behind that. We are down by around 5 points in the current trade, but that's not an issue. I'll give you an update once the market's about to get closed. ठीक है, मार्केट क्लोज होने से पहले एक अपडेट दे दूंगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, and I'll give you an update on the positional trades as well. Alright guys, the time is close to 3:10. Almost मार्केट खत्म होने को आ गया है। मैंने जो एक्सप्लेन कर रहा था 35,500 का जो स्ट्रैडल है उसको मैं हेज डाल के आई टेक होम बोल रहा था मैं, बट दीज हेजेस ओके दे आर नॉट एट ऑल लिक्विड। देखो 4 पॉइंट्स का स्लिपेज है, करेक्ट। अगर मैं 250 क्वांटिटी एग्जीक्यूट करता हूं तो I'll get like 5 point slippage in this and another 5 point slippage in this, and also market is not actually looking strong in particular, correct? If at all the market was supposed to turn bullish, then this momentum had to continue, but जैसे momentum continue कर रहा था वापस आ रहा था, अगर फिर से continue कर रहा था वापस आ रहा था, because of which I'm not particularly very comfortable holding on to these positions. So what I'm gonna do is probably I'll by the day end, like even 20-25 minutes, I'll close this also. ठीक है, so बैंक निफ्टी अकाउंट में वैसे मैं कुछ ट्रेड लिया नहीं है, so we took a loss of -2.3k in the बैंक निफ्टी अकाउंट,
and on the Nifty account we are somewhere around 24k with some of the adjustments that were made to the positional trade. ठीक है, positional trade पे थोड़ा adjustments मिला के आज का जो ट्रेड है उसमें 24k हमने बनाया है, and positional trade gave some loss of somewhere around 6k or something, 6-7k something loss दे रहा है, but that's okay. देखो, I had a view, correct? मेरा व्यू क्या था, मार्केट ऊपर जाएगा करके. I took the trade somewhere at this point. मार्केट ऊपर तो गया, but then it reversed. I still held on to my position. देखा मैंने, हाँ ठीक है, it might be a retracement, ठीक है. Then again ऊपर की तरफ मूवमेंट चालू. उसके बाद भी when this movement started, then I was not quite comfortable, with my view. हो गया मेरी व्यू गलत, but in spite of the wrong view, how much we made somewhere around 4.5k, which is somewhere around 16-17 points capture कर ही लिए उसमें. ठीक है, that too without giving anything to the hedges. तो hedges इसलिए मैंने buy नहीं किया था, because I wanted to see how the markets do on a day when they gave a momentum. ये momentum करने के बाद मार्केट्स कैसे बिहेव करता है वो देखना चाहिए था मुझे. If अगर मार्केट्स ऊपर की तरफ ऐसे कंटिन्यू करता है, then I wouldn't have minded to buy the hedges and take this position. Today's market was quite tricky. मतलब इतना आसान नहीं था आज का मार्केट, because when markets were coming down, the put side IV started spiking. When the markets started heading up, the call side IV started spiking. So not a very good day for option sellers in particular, unless you held on to a particular straddle and held on to it in spite of all the MTM fluctuations. Then you'd have gotten a decent decay with both 15,700 and 15,750 straddles. But when the market starts moving something like this, especially when the market's at an all-time high, you should always be cautious to expect a profit booking. And when this happens, I'll be the first one to get out of the market. Profit नहीं चाहिए मुझे बस loss भी नहीं चाहिए. ठीक है.